development. What sort of leaders are we looking for today? When we talk about all leaders in organizations, what are the goals? What sort of behaviors do all leaders need to have, given the complex and the dynamic business environment they're working in, right? Things have changed so much. We talked about generational shifts. We talked about change in the environment that these organizations are working in. So how do we ensure that we have the right leaders? Do they have those sort of competencies? Do they have those sort of behaviors that we are looking forward, that we are looking for in our leadership? So that's something that we will be basically discussing today, and that's what the entire panel will be focusing on. So I think I'm going to start off with Sadia. Sadia, if you could shed some light on this subject of how do you think that leadership has evolved, and how can they further evolve, and what do you think the leadership requires in order to sustain itself as they navigate through this challenging business environment? Thank you so much, Khalida, and assalamu alaikum everyone, and thank you, Shahad and team, for inviting me to be a part of this panel. And I can see many friendly faces, many acquaintances and friends sitting there. Always a pleasure to be here, sort of after or post-COVID times. As an academician, मैं 1970s से लेकर अभी तक लिटरेचर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज पे पढ़ती रही हूँ. My most recent project is currently ongoing. 140 countries में किस तरह differences हैं leadership competencies में, desirable leadership competencies. Sum up करना हो तो leadership में एक बात से बेहतर आपने समझना leadership कुछ नहीं. So this one शेर, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जांपुर सोज, यही है रफ्ते सफर पीरे कारवां के लिए. जितने भी फ्रेमवर्क्स आते हैं, to have a complete package, लीडर कौन होता है, उसमें किस तरह की कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, टेक्निकल बिजनेस रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल कॉम्पिटेंसीज. ये जो तीन मेन एरियाज हैं वो आज से 40 साल पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आगे भी चाहिए होंगे. दैट मेक्स द पैकेज. जैसे अगर हम पहले की बात करें, हम बात करें निगाह बुलंदी की बात करते हैं, विजन लीडर्स को 40 साल पहले भी चाहिए था, आज भी जो बंदा लीडर है विजनरी होना चाहिए. इंटरपर्सनल पे आते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सो कम्युनिकेशन स्किल्स पहले भी चाहिए थे, अभी चाहिए. हाँ, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कैन चेंज. अब जो है सोशल मीडिया के साथ क्या है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन और इंक्रीज हो गई बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन क्रॉस कल्चरल टीम्स. सो नेचर कैन चेंज देयर. फिर मैं आती हूँ पर्सनल पे, और पर्सनल में आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ पर्सनल इन 2 पार्ट्स. पर्सन दैट इज एक्सटर्नल, जो दुनिया को नजर आता है, जैसे मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट उनको नजर आ सकती है. एंड वो भी पास्ट में भी चाहिए थी और आगे भी चाहिए, और बल्कि टाइम मैनेजमेंट के चैलेंजेस आगे और बढ़ते ही जाएंगे फॉर एग्जांपल. और फिर हम बात करते हैं इंटरनल वाली. पर्सन में आप एक्सटर्नल सोचें और पर्सन में आप इंटरनल सोचें. जैसे इंटरनल में सेल्फ कंट्रोल, अ लीडर नीड्स टू हैव अ कॉम्पिटेंसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल. पास्ट में चाहिए था, शायद आगे और ही ज्यादा चाहिए है, बिकॉज विद ऑल द इंफॉर्मेशन ओवरलोड, विद ऑल काइंड ऑफ false news here and there, kind of distractions which are there. So I would start by saying कि basic जो चीज़ है वो तो इकबाल ने समराइज कर दी. बहुत रिसर्च के बाद लोगों ने भी कहा 3 एरियाज हैं जो इकबाल के शेर के मुताबिक ही हैं, और फिर हम आगे डिटेल्स में जा सकते हैं. So I'll request. Thank you so much, Sadia, for very enlightening answer. I think I'll take the word Haroon to shed some further light on this. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. लीडरशिप जो है उसको एक खुदानुमा एक स्टेटस दिया गया है, खुदानुमा. सो प्लीज डोंट हैव एनी ब्लास्फेमिक व्यूज अगेंस्ट मी. और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दैट वी हैव काइंड ऑफ लिमिटेड इट टू a few people within the organization, whichever type of organization, whether it's a public organization, a private organization, government organization, or even a political organization, उसको हमने लिमिट कर दिया है चंद लोगों के ऊपर जो की पोजीशंस के अंदर की पोजीशंस होल्ड करते हैं, और उन्हीं की हम बैकअप्स तैयार करते हैं कि वो लीडर हुआ है.
मेरा एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है that leadership is something that has to be imparted to each and every individual that exists out there. Why? Because at certain point in time, whether you're working in an organization or not, you will be responsible for your own family organization. आपको उसके लिए आप अपनी फैमिली, अपने कुंबे, अपने उन लोगों के लिए जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, लीडर का रोल परफॉर्म करना है आपने। और जिस तरह सादिया ने बताया कि लीडरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्क नहीं है, वो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटी, टाइप ऑफ एंटिटी के ऊपर जाएंगे, किसी भी कल्चर के अंदर जाएंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, फर्क नहीं है उसके अंदर। We would want everybody to be empathetic. We would want everyone to be able to communicate better, able to work independently, able to support their peers and their colleagues. लेकिन ये करने के लिए जो हमने उनको सिखाना है कि ये कैसे, how do they learn these abilities? We've unfortunately neither covered it in academia, sorry to say, and maybe in business management courses, but I think it has to be democratized. It has to be done at every level, in every institute, whether it's a computer science, it's a social sciences, it's a humanitarian or whatever institute, it has to be democratized. We need to start imparting this onto our children, onto our graduates, so that they understand कि ये चीजें हैं क्या, empathy होती क्या है, communication है क्या, इज्जत, respect है क्या. So I think we are lacking severely in that. And then what happens is we try to live with whosoever is available, whosoever we can perceive to have some part of these skills. And वो कहते हैं ना, जो आजकल हमारा कल्चर बना हुआ है, I'm sorry to give a political reference here, बुरों में अच्छा बुरा. So we're compromising on our leaderships. And I think it's about time that we need to start. And I think this discussion will lead to the fact, how do we come out of that compromise? How do we say that a leader is someone who has these characteristics, undoubtedly non-controversial? I think that's where we need to start looking into. Thank you so much, Haroon. I think it's a very relevant, thing that is picked up on the fact, the sort of area we're working in or the environment that we're operating in, and the fact that one shoe does not fit everyone. Mohsin here sitting, who's basically an HR leader as well. So Mohsin, if you just to shed light on the fact that a complex environment में Pakistan operates कर रहा है, you have your leaders coming in. The CHR is obviously at odds with the finance leadership, जहाँ हम अपनी budget discussion हो रही है versus talent development. How do you navigate that sort of a situation, being an HR leader yourself? And what do you think should be the competencies that other leaders should also have from the HR lens or as a leader, and the competencies which perhaps need to be inculcated for the future as well? So thank you, Khadija. If I have understood your question correctly, तो आपने मुझसे आसान अल्फाज में पूछा कि HR के लीडर को in a very complex environment and maybe navigating not only budget, there are a hell lot of things post-COVID which HR professionals actually deal with. उनको कैसे करने के लिए competencies चाहिए. तो मैं पहले तो जैसे मैम सादिया ने एक शेयर से आगाज किया था, तो मेरे ख्याल में HR का जो रोल है ना, जो मैं समझता हूँ, मुझे इस शेयर में पूरा नजर आता है, and then maybe I can quickly take all of us through some of the competencies I feel that have worked for me. वो है ऐसा चीज, उनसे पूछो कभी चेहरे भी पढ़े हैं तुमने, जो किया करते हैं किताबों की बातें अक्सर. So I think that the thing which HR is actually supposed to do, while on one hand juggling with policies, procedures, budgets, constraints, complexities, is to actually, what is the need? Can I connect heart to heart with that person and balance a book here? That's the best part of, I think, my job as HR professional. तो है तो समरी तो ये है कि अगर आपको ये करना आता है तो आपने शायद मास्टर कर लिया. अब आपने जो बात पूछी थी, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं जो अभी तक लर्न कर पाया हूँ कि बड़ी डिबेट होती है कि
क्यों HR की बात का इफेक्टिवनेस नहीं होती, कैसे हम इसको नेविगेट करें. I can talk philosophy a lot. I can talk about employee engagement. I've been working in organizations जहाँ पे employee engagement, effectiveness, satisfaction, I think इनके index को calculate करने के लिए Nexa, Hay, etc. We have paid millions and millions of dollars, and yet maybe after 10 years we are saying कि company तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकी. तो वो एक maybe कुछ उन चीज़ों की reality भी है, but मुझे लगता है कि इसको आप जो बहुत basic है ना कि किसी भी चीज को नेविगेट करने के लिए, if I am as an HR person able to answer the simple question, what is in it for the person who has money, what is in it for the employees who have to spend time, I think I can navigate anything. That's the one competency which I feel we don't spend time on, which means कि मैं as a HR professional टैक्स ऑफ बहुत आती है, लेकिन मुझे इंसाइट्स का कोई शौक ही नहीं है कि अच्छा ये 100 बंदे हैं, 3 हो सकता है इसमें से मार्केटिंग जैसे सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन करती है, ए से हैं, 3 एफ से हैं, 2 बंदे लम्स के हैं, 4 बंदे लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी के हैं, 2 बंदे जो हैं उन्होंने MBA किया हुआ है, 6 बंदे जो हैं वो MIT के ग्रेजुएट हैं. How can I actually make them pick to actually deliver what my organization is actually supposed to deliver? We are not there for charity, we are not there for party, it's the byproduct. If everyone, if the company is able to grow, we all grow. होता है ना, we grow, you grow. So वो वाली जो हम उसको उल्टा करते हैं कि जी हम कहते हैं कि you grow, we grow. अब कंपनी तब आपको ग्रोथ देगी जब उसे नजर आ रहा हो कि ये इन सारी बातों में कंपनी को भी कोई ग्रोथ दे सकता है. उसके लिए इंसाइट्स मुझे जनरेट नहीं करनी आती, मुझे उसके बाद उस इंसाइट्स का which is data मैंने and just I will stop because we wanted to listen gurus like Kamran साहब, मैं बहुत पुराने शागिर्द हूँ. तो उस पे जिस तरह एक दफा मैंने किसी से पूछा, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट लॉन्ग टाइम बैक आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड गुड HR टैलेंट. माय बॉस असाइन मी, उनको रिसर्च का बहुत शौक था, जो मैंने कहा है वो शायद इनसाइट में बहुत अच्छे थे. उन्होंने कहा सारी कराची की 8 बिजनेस स्कूल्स में पूछो कि जी HR में क्यों नहीं आते, या अगर जो लोग HR में आना चाहते हैं HR को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं. Most interesting to answer, but I think for the fun part of it, if we can have mics in the audience, any wild guesses? मैं बताऊंगा आपको, but थोड़ी सी आप लोगों की भी एनर्जी आ जाएगी. आप लोग गेस करना चाहते हैं कि जी मुझे collectively basis पे what was the most pronounced reason that the passing out graduates of universities actually wanted to join HR? Any wild guess? HR is easy. It's easy. HR is Dot one. मेरा वाला गिफ्ट इनको दे दीजिए. Question का आंसर. और उसी दिन मैम I thought please send these people to spend 8 hours with me in the soap plant with 3 unions, and they will get to know the heck of it that whether HR is easy or fun. मैं इसको अभी difficult जान के नहीं कह रहा. It's not at all difficult if it's done from heart. Second reason. I'm not good with numbers. I want to. I like people, so I want to work in a function which is about people. But unfortunately, that's what we need to develop. Is this the competency we are looking for HR people? We have been unfortunately, and it's my responsibility कि मैं स्टेज पे हूँ, मुझे बच्चों को मेंटर, कोच, गाइड करने का मौका मिलता है. उनको शायद मैंने सिखाया ये कि तुम मेरे पास इसलिए आओ बिकॉज़ ये आसान तरीन फंक्शन. यहाँ पे सॉरी तो एक और तीसरा रीजन भी था वो, and no offense to it because I am the biggest proponent of D&I, वो था सबसे ज्यादा लड़कियां इस फंक्शन में काम करती हैं, तो ये तो आसान तरीन काम होना ही है. which has but this survey was done 14 साल पहले किया था मैंने, और मैंने उनको बताया कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ उससे तो उसकी CEO भी एक मोहतरमाई थी, और उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कामरान साहब से ब्रेक में उनका नाम का जिक्र हो रहा था, मुशर्रफ भाई. she's a very famous Asian women leader. So I think that's to cut long. I think कुछ basic हमारे ingredients में हारून मैम ने जो बात की है कि उन तीनों के अंदर हमने कहीं वहाँ पे गलती कर दी है. हमने उनका जो वो रेसिपी है ना कि बनने के लिए क्या चाहिए, उसमें हमने ये कह दिया what is in it for me, and we have forgot to answer that question that जिसका मैं HR हूँ, what is in it for them. If I am able to answer that, I think I have cracked the code. So I think that was a very valuable and valid insight. Thank you so much, Mohsin. Kamran sir, अगर आपकी तरफ ही मैं सवाल लेके जाऊँ that it is at the end of the day shared responsibility, and you sit on the other side
leaders come to you with their own challenges, that we're working in a remote environment, there are buzzwords like digital transformation going around. We have lived through a pandemic, currently in a pandemic as well. And HR is also talking about people burning out, talent issues are coming in. Some people have talent pipeline problems, especially the IT industry. And you have someone sitting next to you who represents that industry as well. So how do you look at it, and what would be your, basically response to those sort of challenges which exist from the organizational perspective and also from the people lens as well? Okay. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So Sadia को सुनने के बाद और हारून और फिर मोहसिन and Naomi, what I'd like to say is कि वो जो शेर है आपने भी सुना है, मैं भी सुनाऊँ। वो है वो तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा, ये तो चलती हैं तुझे। So that to me is again eternal as far as life is concerned, because जिस लाइफ में चैलेंज ना हो उसमें कोई जायका नहीं है, कोई मजा नहीं है। और चैलेंज वो चीज़ होती है जो प्रॉब्लम से शादी करने वाला सिलसिला होता है। जो लोग प्रॉब्लम देख के भागते हैं वो क़यादत से भागते हैं, और जो प्रॉब्लम को देख के कहते हैं आ जा गले ला ये झप्पी, तो वो चैलेंज कहलाता है। अब जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी ग्रोथ होगी। The reason I emphasize this is because there are 4 words and I want you to remember them as Pappu Rere. मैं कहूँगा पप्पू, आप कहिएगा रेरे। पप्पू पप्पू रेरे। हाँ। Now that you've got Pappu Rere, the 4 words are practical, बोले? Practical. Possible, relevant, realistic. Now these are the 4 words around which the whole world operates. Okay? The whole world operates. Now this jet, for example, to my right, is in the technology domain. अब मैं इनसे एक बात अगर कहता हूँ कि यार एक वक्त आएगा कि ये जो सड़कें हैं इसको लोग देख के हंसेंगे, ब्रिजेस को देख के हंसेंगे, हवाई जहाज़ों को देख के हंसेंगे, स्पेस शटल को देख के हंसेंगे। एक वो वक्त आएगा कि आप डायल करेंगे, आप जहाँ जाना चाहते हैं पहुँच जाएंगे। और अगर ये कहते हैं बकवास ना कर, तो इसका मतलब इनका पप्पू रेरे बहुत छोटा है। You get it? और ग्रोथ की जो बात होती है, capacity, from primary school all the way up to masters and PhD and MPhils, if the Pappu Rere is not expanding, there is no growth. And I assure you कि मैंने देखा है लोगों को जब हम कहते हैं ना ये चैलेंज है इसको करके दिखाओ, सर है नहीं हो सकता, बस खत्म होगी बात। तो लीडरशिप की तो बात ही ना करो ना। It's not about lafazing, as has been said. It's about delivering. अब मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दे दूँ कि लीडरशिप को हमने हुआ क्यों बनाया है। देखिए अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा इंसान होता है। सबसे पहली चीज तो आप ये बिठा लें, if you're not a good human being, you're a lousy leader. अब अच्छा इंसान कौन होता है? अगर आप उसके अंदर पढ़ जाएं, you realize कि you have a lot to do right now. I have a lot to do. अच्छा इंसान बनना। Now the point is, अगर मैं कहूँ कि आप कौन है तो आप सब कहेंगे मैं इंसान। You are not. I am not. I am saying this. हम आदमी हैं, आदम से हैं, इस दुनिया में आए हैं। क्यों आए हैं? इंसान बनने। और इंसान कौन होता है? जो इंसानियत करे, और जो इंसानियत करता है उसको कायद भी कहते हैं। तो ये एक बड़ा जरूरी पहलू है कि हम अपने आप को सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाएं, इससे पहले कि हम अच्छे लीडर की बात करें। दूसरी चीज जो है कि एक अच्छा लीडर होता कौन है? जो अच्छा फॉलोअर हो। एंड आई विल अश्योर यू कि a lot of people I've heard कि यार मैं फॉलोअर था, अब मैं लीडर हो गया हूं। सॉरी, you are a follower today, you will be a follower till you die. A good follower is a great leader. जो फॉलो ही नहीं करता वो कैसे एक अच्छा लीडर बन सकता है? तो कैपेसिटी बिल्डिंग में, no matter whether it is logic or philosophy, conceptual expansion is going to make all things possible to man and woman. I mean, I say man in the most inclusive manner. और एक अच्छा लीडर वो होता है जिसका एक कॉल होता है, and the call is leave no one behind. किसी को पीछे मत छोड़ो, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। And I believe in Haroon's
remark, which is democratization. I mean, sabko, everyone in your system is a leader and a follower. It's not about ego. It's about humility. जो भी combined knowledge दुनिया में आज है about anything, it is a drop in the ocean of what there is to know. And anyone who has learned something and thinks he is a guru, मर गया, बढ़ गया. Because तकब्बुर वहाँ से आता है. और एक लीडर में अगर वो होता है ना, एक सरिया लग जाए, अल्लाह माफ करे. And I've met a lot of such people with a, you know what I mean. Please, a great leader is humble, down to earth, and is very comfortable in saying, I made a mistake. I'm very comfortable in saying, I don't know. Very comfortable in wanting to learn from the chotas. The Gen Z जो है ना, बकवास है. I am Gen Z also, by the way. Yes, because देखो forward gear तो है, लेकिन reverse gear भी है. मैं अपने पोते से मिलता हूँ 5 साल का है, तो मैं उसके साथ उसकी तरह मिलता हूँ. I mean, he cannot come to 64, so I meet him at 5. I can't. I've been there. Yeah, and my mentor is another pota. He's 13. My mentor. Why? Because उसकी नजर से मैं दुनिया को देखूंगा तो फिर कुछ कर पाऊंगा. देखो बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ जीना कैसे. Bullshit. Pardon my friend. Anyway, these are some thoughts. Thank you so much, Kamran, for that. And I think the takeaway for this discussion is that humility is very important. The sort of organization, the sort of behavior that you are exhibiting as a leader, I think that really does set the tone for the company. I remember working in a company where the boss, the company separate है, you can't enter. आपने पहले जी secretary से पूछना है, and then obviously, and then having worked in an organization, we could just walk in through, and it's an open door policy. I think that really sets the tone for the overall motivation and the morale of the organization as well. So thank you so much.